ममता जी के पीछे जो गुड वो है मॉर्निंग ना, वो ऑल। एक लगा ऋतु हुआ है जी ऐसे एक कि और सूरज ऋतु की है। सारी किरणें हैं। हाँ, इस मॉर्निंग ऋतु जी को साईं स्वागत। जी, आई एम सिटिंग माई बुटीक, ऐसा साईं जी, साईं बाबा। ओके, गुड Hi, मॉर्निंग colleague. गुड मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दीप्ति, गुड मैम। Good morning, मॉर्निंग। Dipti हाँ, गुड 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 मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। दीप्ति। Very good morning, गुड everyone. मॉर्निंग बैक टू मैम, Good गुड दिल्ली। मॉर्निंग। morning, मॉर्निंग ma'am. मैम। Good morning. Come back to गुड Delhi. मॉर्निंग बैक टू मैम, वेलकम दिल्ली। बैक टू Very दिल्ली। good morning. No, I'd come yesterday morning only. Yesterday I had attended. ओके। Yeah. So good morning and thank you. Thank you for joining in and everyone on the Zoom call and on the YouTube. YouTube में थोड़ा वो पैसे वो जाता है, but then y'all are there live. That's a big thing for us. So thank you for waking up so early to transform your life. And this time when the मैम sun थैंक यू टू rises, यू। thank you so much. So this time when the sun rises, at that point of time when we are in that rhythm in alignment with the universe, तो उसकी वजह से भी life change होती है. This is over and above the practices that we do. है ना? We have to get addicted to growth. So the managing director of our company of VLCC verticals or all the verticals. So he always says this, get an obsession for growth, get obsessed about growth, and with his whole life and his being, he normally says this. And I like that about him and learned that from that, get an obsession for growth, for great growth in life. So we have to get an obsession for great growth in life in every way. एंड प्रैक्टिसेस के मामले में इतनी सारी प्रैक्टिसेस हमारी, आई थिंक हमारा वो बीइंग होता जा रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है इसे करने में. दैट देयर बी नेवर एनी डाउनफॉल इन योर लाइफ, दिस आई कैन गारंटी, बिकॉज इसीलिए हमने प्रैक्टिसेस ऐसे, बिकॉज कोई भी प्रैक्टिस ना सिर्फ 5 मिनट की, 10 मिनट की, एक बार की, 2 बार की नहीं होती है, वो एक्चुअली 24/7 की है. जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस होती है वो 24/7 की है. इट इज अबाउट द माइंड सेट. It is so, hence it is always said that whatever you do in your life, push the limits beyond what, push your boundaries constantly. If you're not pushing your boundaries constantly, मतलब और ज्यादा, say 10% more than what we were last month, उससे ज्यादा हमको होना है. Next month we will again be 10% more than what we were doing this month. So इस तरह से हमारी boundaries push कर करके हम अपने आप को भी तो challenge करेंगे ना, अपने आप को challenge करना that yes I could do this, wow, and keep rewarding yourself. So that is what is called as every day, in every way I'm getting better and better, because we are constantly pushing our boundaries, constantly doing a little more than what we were doing yesterday. So many people have done it. They see the evidence of it. Miracle की तरह ये जादुई शक्तियां जो हमारे आसपास है, जिनके बारे में हमारा लॉजिकल माइंड ने हमको कभी उनको देखने नहीं दिया, वो अब देख पा रहे हैं. और अबंडेंट माइंडसेट हमारा होता जा रहा है. और प्रैक्टिसेस कर करके, है ना, ये टूल्स हैं. मतलब मुझे इस वाली किताब में ये अच्छा लगता है. मुझे सीक्रेट भी बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मुझे हीरो किताब भी हमने पढ़ी हुई है ना. सो उसमें भी हमने उन 12 लोगों का बिल्कुल रैग्स टू रिचेस स्टोरी देखा था, कैसा उनका माइंडसेट चेंज हुआ, सब हुआ, कैसे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई. 12 लोगों की जो बहुत ही गरीब थे, उनमें से कई लोग तो स्ट्रीट्स पे रहते थे, उनके पास खाने को भी पैसा नहीं होता था. सड़क पे रह के, सीढ़ियों पे सोना, पब्लिक बेंचेस पे सोना, शेल्टर्स में रहना, वो, है ना, वो सब कर करके फिर उसके बाद आज वो ब्रांड्स हैं, और वो भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं. सो उनके बारे में हमने सब पढ़ा. बट मैजिक बुक सबसे हटके है, अलग है, बिकॉज इसमें हमको बताया गया है कि आप ये वाली चीज करो, आप ऐसे सोचो, आप एक कार्ड बना लो, आप उस पे ये पेस्ट कर दो, आपने जब भी पैसे दिए हो तो आप मतलब बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ दो, जब आप रिसीव कर रहे हो तो आप थैंक यू बोलो, जब आप चल रहे हो पैदल, उसको मैजिकल फुटस्टेप्स का नाम दे दिया है. तो कुछ भी नहीं छोड़ा है हमारे लिए. हमको ग्रैटिट्यूड ने, सबने, मतलब पूरी तरह से हमारी हर एक चीज को कवर कर लिया है उसमें, इजंट इट. मतलब अपनी बॉडी के लिए थैंक यू बोलना, नेचर के लिए थैंक यू बोलना, 5 बार एयर ब्रीथ करो और उसके लिए थैंक यू बोलो. तो these are tools that have helped us to change our life over and above the self talk जो दूसरी किताब हम पढ़ते हैं, जिसमें हमको पता लगता है कि माइंडसेट काम कैसे करता है. And this is how life opens itself to us, with a very childlike mind, and just working with surrender and not um, exerting effect or coercing too much without, like अपना काम करो और भूल जाओ, रिवॉर्ड तो उसके हिसाब से आएगा ही आएगा. Because eventually when everybody says, it has been proven that everything is about energy, frequency and vibration. So शब्दों की एनर्जी होती है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी होती है,
उसको शक्ति तो बोलते हैं, है ना, वाक्य शक्ति तो बोलते हैं उसको। वाक्य शक्ति मतलब द एनर्जी, द पावर ऑफ वर्ड्स। सो जब पावर ऑफ वर्ड्स हमको पता लगता है तो किस तरह के हम वर्ड्स यूज करते हैं, दैट आई एम सो अमेजिंग एंड दैट माई लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई गिव एंड रिसीव ओनली लव फ्रॉम एवरी पर्सन आई मीट, आई रियली लव द ब्यूटिफुल एयर दैट आई ब्रीथ, आई लव माई सिटी, I love meeting people. I love so many people around me. I really love this. I really love going for a walk. I really love the taller trees. I really love these short trees which look so beautiful. I love different colors of the flowers and plants. I really love the road on which I walk. I love movement. I love growth. I love constant movement in life. I love to see that escalation for little things. I love to feel exhilarated about, little things and little joys in life. I love sharing love. I love receiving love. So this is how we use these words, जिसको हम हिंदी में वाक्य शक्ति बोलते हैं। तो वाक्य शक्ति में इतनी ज्यादा पावर होती है कि हमारी लाइफ में जो जो वर्ड्स हम यूज करें वो हमारा बीइंग होता जाता है धीरे धीरे। और फिर हमको ये एक तो कंट्रोल करना है ना, बहुत जरूरी है कि क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फिल्टर लगाने की जरूरी है ना। फिल्टर, स्ट्रॉन्ग फिल्टर लगाना लगाना दिमाग में, कि जैसे हमारे एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, हमारे मतलब is a part in of our body, ब्लड ब्रेन बैरियर। सो मतलब ब्लड में तो बहुत सारी हम कुछ टॉक्सिक चीजें भी डाल देते हैं। सपोज कभी हमने कुछ पी लिया, सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, हमने कोई ऐसी चीज खा ली जो बहुत अनहेल्दी है, जिसमें केमिकल था, तो हमारे, और ब्रेन बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो हमारे नेक रीजन के नीचे एक एक फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। सो वो सब कुछ ब्रेन में नहीं जाने देता। जैसे अगर हमने कोई बहुत गलती से अननोइंगली पॉइजनस चीज खा ली है, तो अब हमको पता नहीं था कि उसमें इतना ज्यादा केमिकल है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस फूड था, हमको मन किया हमने खा लिया, लेकिन वो ब्रेन में जाने से ब्लड ब्रेन बैरियर रोक लेता है। सो ब्रेन में क्या क्या जाता है इसके लिए एक फिल्टर लगा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए हम, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो इसी तरह से, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह, एक फिल्टर की तरह काम करता है। तो वो वहां पे वो सीव करेगा, सॉर्ट करेगा कि क्या चीज अंदर जाने देनी है सबकॉन्शियस माइंड में, क्या चीज रिजेक्ट करनी है, जिसके लिए एक चेंज गेम है हमारा। जैसे हमारा कोई थॉट आया, हमको पता है कि उस थॉट को हमको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, गलत थॉट है, अब वो विचार शक्ति है ना, वो तो सत्य हो ही जाएगी। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, तीनों तीनों से हमारी जिंदगी में फर्क पड़ता है, तीनों ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। तो अब वो जो विचार शक्ति है, उससे क्या हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस में जा रहा है। सो पहले तो सब कुछ कॉन्शियस माइंड में ही आता है, सोच कॉन्शियस माइंड में आती है, रीजन एंड लॉजिक कॉन्शियस माइंड में होता है। तो अब रीजन एंड लॉजिक के कारण हमारा कोई ऐसा थॉट आया कि वो पर्सन तो बहुत खराब है, वो इसी तरह से बिहेव करता है, मुझे उससे बात करने का मन बिल्कुल नहीं करता, और आपको उसकी वजह से हो सकता है गुस्सा आता हो या इनसिक्योरिटी होती हो। तो अगर गुस्सा या इनसिक्योरिटी हो रही है तो वो कॉन्शियस माइंड का काम होता है, क्योंकि वो अच्छे से जज करता है, आगे पीछे से देख के, और फिर डिसाइड करता है, जज जज करता है कि सही है गलत है, मुझे नहीं पसंद है ये, ऐसी सारी चीजें। लेकिन हमको ये पता है कि हमारा पावर ऑफ थॉट्स है जो फिल्टर होके चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस में जाके वो रियलिटी बन जाएगा। तो वो जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, कि ब्लड से हर एक चीज ब्रेन में नहीं जा सकती, वैसे हमारे परसेप्शन से कौन सी चीजें कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस में डालनी है, इसके लिए हमको अलर्ट होना पड़ता है। और उस अलर्टनेस को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। Mindfulness is not meditation. Mindfulness means know your thoughts. Observe them. Observe कि दिमाग में क्या चल रहा है और कौन सी चीज आपको सबकॉन्शियस में जाने देनी है, उसको आप एनर्जी दो। ठीक है, उसको खूब अच्छे से एनर्जी दो। जो चीज सबकॉन्शियस में डाली, जैसे अगर आपको बैठे बैठे याद आया कि यार आई आई रियली विश, आई होप कि मेरा ऐसा सुंदर सा घर मैं खरीद पाऊं इस सिटी में, उसमें 2-3 कमरे हैं, 3 कमरे अच्छा रहेगा, उसमें ये हो, उसमें आप एनर्जी डालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको जाने दो। जैसे वो ब्लड से ब्रेन में जाता है, वैसे इसको कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाने दो, बाय गिविंग इट मोर एनर्जी, बिकॉज जिस चीज को हम एनर्जी देंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, किसी भी चीज को जब आप एयर टाइम देते हो।
किसी रिश्ते को एयर टाइम देते हो, किसी सोच को एयर टाइम देते हो, किसी शब्द को एयर टाइम देते हो, है ना। शब्द को भी अगर आप एयर टाइम देते हो तो वो भी सबकॉन्शियस में जाएगा। अगर आप बार बार सोचे हो हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी होते हैं, है ना, सारी संकट हर लेते हैं, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है ना हनुमान 40 समय। तो वो आप उसको एनर्जी दे दो, आप वो आपकी सबकॉन्शियस में चली जाएगी और एक बिलीफ, एक फेथ हो जाएगा कि वेन एवर आई डू दिस, मेरे सारे संकट मोचन है हनुमान जी, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ या मैं उसको सुनती हूँ तो मेरा अपने आप लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं बहुत फास्ट। तो इस तरह की चीजें जब आप सोचते हो तो इन चीजों को टाइम दो, और माइंडफुल रहने की जरूरत है कि हम उल्टी सीधी चीजों को टाइम ना दे, लेकिन थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस हमेशा अलाइनमेंट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप थॉट्स एंड वर्ड्स में यू वांट टू बिकम अ बिलियनर, बट जहां पे बिल देने की बारी आती है वहां पे कंजूसी करने लग जाए, या लैक की मेंटालिटी आ जाए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव द मनी। प्रिया Yes, ma'am. I think ma'am got. हाँ आ गई मैम, मैम. other God, I think she'll just take a minute or something, or let us see. Okay. Yeah, No, मैम the is net here. had gone, so what happened? The screen बस मैम आप एकदम से मैं होस्ट बन गई थी, मैं समझ गई थी कि इसका मतलब आप नहीं है। अच्छा, तो आपको मुझे बनाना पड़ेगा। मैम आप फिर से Now you are होस्ट the हो। host. मैम अच्छा, आपका आपको रिक्लेम हो host? जाता है। हाँ जी मैम। अच्छा, हाँ, तो मैं ये आपको बता रही थी थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस के बारे में, दैट वो अलाइनमेंट में होने बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल ये था, जैसे अगर हम बोले दैट आई एम गेटिंग मोर एंड मोर अबंडेंट बाय द डे, आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम अ मनी मैग्नेट, है ना। लेकिन जब आपको बिल पे करने का टाइम आता है उसके बाद एकदम से लैक की मेंटालिटी आ जाती है, तो इसका मतलब है थॉट्स एंड वर्ड्स आपके थे लेकिन एक्शन नहीं है। तो थॉट्स एंड वर्ड्स होने से नहीं होता, थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस सेम चीज सिग्निफाई करने चाहिए। अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हो, दैट आज मनी वाला चैप्टर है ना, इसीलिए इसका एग्जांपल भी देते हैं। तो मनी का होता है थॉट्स, एंड थॉट्स आर देयर दैट आई लव बीइंग abundant and abundance is my birthright, or whatever you might say, I'm a money magnet, it rains money in my life, this happens, that happens, all that, है ना। वर्ड्स भी आपके ऐसे हैं क्योंकि ये वर्ड्स भी बार बार आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, 555 प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन एक्शन में ये नहीं आ रहा है। अगर अगर एक्शन में पैसे देते वक्त संकोच कर रहे हो, और यू आर नॉट एबल टू रिलीज द मनी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू कैन इजिली अफोर्ड इट, for someone who's, like who has 1 lakh in the bank account can easily pay 2,000 rupees, isn't it? I mean, that is not a very big amount for a person who has 1 lakh rupees in the bank account. But still, while giving it, there is a lack mentality. That means thoughts and words are there, but action part is missing. Yeah. So then the press doesn't get answered very easily. So abundant mindset needs to be cultivated. We have to train ourselves to be the person we want to see and the change that we want to see in our life. Any outward reality will only come when the inner changes happen. जैसे सदगुरु जी की वो होती है ना, एक वो वर्कशॉप करते हैं इनर इंजीनियरिंग, आई एम श्योर आप सबने इसका नाम सुना होगा। हर जगह बैनर्स लगे होते हैं, सदगुरु जी की सुंदर सी एक फोटो होती है और लिखा होता है वर्कशॉप और सेमिनार समथिंग वट एवर और इनर इंजीनियरिंग। सो वो इनर इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आउटर इंजीनियरिंग करके हम सब देख चुके हैं वर्ल्ड इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड, आई मीन एवरीवन हु सेज दैट बहुत हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क का फल ऐसा होता है, जरूरत ही नहीं है हार्ड वर्क करने की। हार्ड वर्क अपने आप पे करो, इनर इंजीनियरिंग से आउटवर्ड रियलिटीज होती है। वही काम जिसमें आपको बहुत फिजिकल लेबर करना पड़ता है, वो काम बहुत आसान से हो जाएगा। इसीलिए मैं विद ईज एंड जॉय हमेशा लगा देती हूँ किसी भी सेंटेंस के आगे जब मैं आपसे बात करती हूँ, दैट विद ईज एंड जॉय। सो इनर इंजीनियरिंग working is very important for us. That is most significant thing. So keep engineering your inner things and the inner mindset that will come. This is the reason हमने इतना ज्यादा आपको बहुत सारे practices अभी दे रखे हैं कि पूरे दिन भर में करते रहे, ताकि हम पूरे दिन भर में कभी डिप ना हो, और हो भी रहे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिसेस करते रहो मैकेनिकली, डेलिबरेटली। नहीं मन कर रहा है फिर भी प्रैक्टिस एज अ रिचुअल करो। धीरे धीरे कोई भी चीज रिपीटेशन करने से आदत बन जाती है, और ये सारी आदतें पढ़ना बहुत जरूरी है
है ना? बहुत बहुत प्रॉब्लम लगता होगा, और आई डोंट नो हाउ टू डू these 15-16 practices in a day. So it's such a good problem to have, because we are so busy doing all these things in spite of the fact that at times we don't feel very okay. But then because of this, the frequency and the energy is going to change, I mean, it will totally transform, and it will take a while. इसीलिए थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, थोड़े पेशेंस के साथ चलो. ऐसे लिखा हुआ है ना, मिनिमम 21 दिन तो लगते ही हैं कि कोई भी नया माइंडसेट डेवलप होने में, तो सब ठीक हो जाएगा. एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. जो भी इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं, just keep doing the practices, and at times it is just thank you, I love you. Even if you speak this, you don't even have to speak very big sentences. आपका नहीं मूड कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस इतना भी कर लो तो बहुत है. थैंक यू एंड आई लव यू. बस यही अपने आप को बोलते रहो. शीशे के सामने जाके मेरा वर्क करो. शेयर योर थॉट्स. बहुत बुरा लग रहा है तो राइट डाउन करो. So this is how we need to move forward with a different kind of this is what is called as inner engineering, along with silence and meditation, which we must do at least once or twice in a day, even if it is for one minute. So अगर ये जो करते हैं हम, मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, अगर ये कर रहे हो तो भी आप मेडिटेशन को स्किप कर सकते हो, बिकॉज जब आप 5 बार इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, उस वक्त भी अपने दिमाग को खाली रखो. इट शुड बी थॉटलेस. Okay, so 5 times you are going thoughtless for about a minute in any case, no? Because 5 deep breath, 5 inhalation and 5 exhalation अगर हम करते हैं, उसमें रफली हमको 1 मिनट लग जाता है. So 17-second formula के हिसाब से आप देखो that every day you are in gratitude, you are going thoughtless, तो अपने आप उसकी, और वो भी दिन में 5 बार, तो अपने आप आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाएगा. एंड यू विल सी द डिफरेंस. बट करो अभी 21 दिन तो पता लगेगा, फिर डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा. एविडेंस ऑफ कोर्स, लाइक सबलिमली वो शुरू हो जाता है बहुत जोर शोर से. जैसे डक होती है ना, वो ऊपर से ऐसा लगता है कि बड़े स्मूथली स्विम कर रही है, लेकिन पानी के नीचे क्या चल रहा है ये हमको दिखता नहीं है. हमको पानी के ऊपर वाला दिखता है बस. तो पानी के ऊपर दिखता है कि वो ऐसे फ्लोट कर रही है, आराम से बैठ के तैर रही है, लेकिन वो नीचे बहुत जोर जोर से अपने पैर हिला रही होती है. वो नहीं दिखता है हमको. इसीलिए कभी किसी की लाइफ देखते हैं, या किसी की भी, एलॉन मस्क की देखते हैं या बिल गेट्स की देखते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है ऊपर से. बहुत लोग मेरी जिंदगी में देखते हैं कि आपका सब कितना बढ़िया चल रहा है, कितना अच्छा है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल इन योर लाइफ, यू आर सो लकी. आई सेड या, आई वर्क फॉर इट. So whenever people say, oh, you look like this or whatever it is, they always say, I've worked for it. Nothing has happened by chance. Of course, by God's grace, बहुत सारी चीजें हमको जिंदगी में मिली है. अच्छे पेरेंट्स और सब कुछ बढ़िया था, घर रहने को मिला था. But then rest, everything is, जब से हम adulthood में आते हैं, we have worked for it. Isn't it? So we have to work for it. Nothing comes like that. उस डक की तरह जो ऊपर चल रही है, जो बतख होती है ऊपर चल रही है, नीचे सबके उसके पैर बहुत जोर जोर से चल रहे होते हैं, पट 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 इस तरह से. जस्ट बिकॉज हमको वो दिखता नहीं है कि ये वाली अंदर ये अपने आप पे मेहनत कर रही है, ऊपर ऐसा लग रहा है कि कितनी आराम से फ्लोट कर रही है. And that is everybody's life. All the celebrities that we see, who have achieved so much in their life, who are at number one, who are brands, but they've really worked for it. Hero book में तो हमने देखा ही था, उनका डेली स्ट्रगल होता था. एक एक मील का स्ट्रगल था, एक एक पैसे का स्ट्रगल था. उनको रेंट पे एनेस्थीसिया को सैलून नहीं मिल रहा था, तो वो धरना दे के बैठ गई अपने ओनर के सामने, कहती है आपको मुझे ये देना पड़ेगा, और मेरे पास तो बस $500 हैं, कुछ है, मैं इससे ज्यादा दे नहीं सकती. और ठीक है, जब सैलून खोलूंगी उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं आपको बाकी के देती जाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे चाहिए. ओनर ने कहा नहीं, इतने पैसे में होगा नहीं. कहती नहीं, मैं तो लेके ही रहूंगी. तो वो धरना ही दे के बैठ गई. एंड देन शी बिकेम अ ब्रांड टुडे. एंड यूजिंग एन एनेस्थेसिया मेकअप प्रोडक्ट इटसेल्फ इज सच अ गुड थिंग, इजंट इट? बहुत बड़ी चीज होती है. और सब ब्रांड्स वहां से कम हो गए. एंड शी इज जस्ट गॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर. So this is the life story of every normal person who has made it big or who has achieved something in their life. If somebody just says that I have amazing relationship with most of the people in my life, that means they worked at it. There's something in them we need to learn from. If somebody says that my income is really escalated, that means that they worked on it. Okay, so that is how life is like. So आज हम day 5 पढ़ते हैं, मैजिक मनी, और इसकी ब्यूटीफुल इमेज है जो सिग्निफाई करती है इस चैप्टर के एसेंस को. लाइक दिस इज अ बैग, ये बैग यूनिवर्स का है.
यूनिवर्स के अंदर पैसे ये भरे हुए हैं, इसकी जिप लगी हुई, हम पैदा हुए थे, अभी भी आधी जिप ही खुली है शायद, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस कर करके आप इसकी पूरी जिप खोल सकते हैं और इस तरह से पैसे की बारिश जिंदगी में होगी. इट इज रेनिंग मनी इन माई लाइफ इज व्हाट वी कॉल इट. This is the meaning of that it's raining money in my life. Okay, but lot of gratitude needs to be given to the money that we've always used and will continue using. Okay, so let's start reading day 5. So Bhumi is reading today. Shikha is reading, ma'am. Shikha, are you there on the call? Shikha. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Please start reading. Pado. Day 5, Magic Money. Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science, Himmel. If there's lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve. It will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, "Thank you," with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you receive that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you feel sincere gratitude for the money you have received in the past,
Your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your lives. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price of this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, a discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Magic practice number 5, magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. Fourth, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Fifth, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it loud and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Sixth, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day.
Thank you, Shikha, Thank you, so ma'am. much. Thank you Thank for you. reading so beautifully. So this is such an important chapter. All of us love money. All of us want more money. पैसा बहुत खुशी देता है. सब कुछ नहीं देता बट डेफिनेटली बहुत कुछ देता है. पैसे से आप लग्जरी एंजॉय करके खुश हो सकते हो. पैसे से हेल्थ भी अच्छी रहती है डेफिनेटली. अगर आप जिम में भी जाते हो, अगर पैसे हैं तो आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हो. पैसे से आपको बहुत एक्सपोजर आता है. पैसा नॉलेज देती है. पैसे से आप कोर्सेज कर सकते हो. पैसे से आप एड फ्री यूट्यूब प्रीमियम खरीद सकते हो. पैसे से हम वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंसेस. पैसा बच्चों को भी मजे देता है. पैसे बड़ों को मजे देता है. नो डाउट अबाउट इट. एवरीबडी लव्स वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, चाहे वो महंगे हो, वट हमारे स्टैंडर्ड से महंगे हो, सस्ते हो, बट पैसा डेफिनेटली गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. पैसा मेक्स लाइफ वेरी इजी. पैसे का एक ग्लो चेहरे पे अलग आता है जो कोई फेशियल नहीं लेके आ सकता. पैसे से बहुत कुछ होता है, नो डाउट अबाउट इट. चाहे कितना भी पैसा हो, क्यों अंबानीज और सब लोग भी अभी काम कर रहे हैं, है ना. कॉन्स्टेंटली दे आर ग्रोइंग. उनके और मतलब यूनिट्स आते जा रहे हैं इधर उधर ऑल ओवर द ग्लोब. एंड व्हाई दे आर स्टिल डूइंग, बिकॉज इट्स नेवर इनफ, इजंट इट. बट देन पैसा ये भी याद रखना है कि एनर्जी है. जो मैंने अभी इंस्टा पोस्ट बनाई थी मनी पे, जो मैंने 3 चीजें बताई थी. फर्स्ट वाज अरिगातो इन अरिगातो आउट. उसमें यही था ना, एवरी टाइम यू गिव मनी से थैंक यू, एवरी टाइम यू रिसीव मनी से थैंक यू. बट वो अभी हमारे चैप्टर नंबर 9 में आएगा, दैट गिविंग एंड रिसीविंग मनी और पेइंग द बिल्स. बट हम सब क्योंकि प्रैक्टिस बहुत टाइम से कर रहे हैं और मैजिक बुक हमारी लाइफ में बहुत टाइम से है, आई एम श्योर ये हमारा चल रहा है. सेकेंड वॉज नेवर बी जेलस और रिजेंटफुल अगेंस्ट एनीवन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी. एंड डोंट से उनका तो पैसे से दिमाग खराब हो गया, पैसा बहुत इजीली आ गया उनके पास, पैसा ऐसे हो गया, है ना. तो ऐसे कभी भी बोलना या सोचना अच्छी बात नहीं होती है. फिर वही थॉट्स वर्ड्स एक्शंस वाली बात आ जाती है. तो इसीलिए उनको सिंक में रखना बहुत जरूरी है. अब थॉट्स एंड वर्ड्स हमारे ऐसे हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई रिसीव मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एक्सेट्रा. लेकिन जैसे ही हम किसी उस पर्सन को देखते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, वैसे ही हमारे मन में एकदम से कुछ आ गया है कि देखो ये पैसे क्यों शो ऑफ कर रहे हैं, ये सब. ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए. कोई बात नहीं, पैसे का शो ऑफ करें, अच्छी बात है. दे मस्ट हैव वर्क फॉर इट. टेक इट एज एन इंस्पिरेशन, डोंट टेक इट विद जेलसी. ये चीजें हमको होनी बहुत जरूरी होता है. और मैंने तीसरा पॉइंट बताया था, जब भी आप पैसा दे, जिससे मांगा जाता है उससे मल्टीप्लाई करके दे. ठीक है, उसकी वजह से भी आप देखोगे बहुत फर्क पड़ेगा. लाइक इफ यू हैव टू गिव, उसमें मैंने एग्जांपल दिया है, कोई भी अगर 370 रुपीज देने हैं आपको, तो आप 400 दे सकते हो या 380 दे सकते हो. अगर 445 रुपीज का आपका बिल बना है तो 445 की जगह आप 450 दे सकते हो. या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पूरे 500 रुपए दे दो. तो इस तरह से जब हम हमेशा एक्स्ट्रा रिलीज करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अबंडेंस की रिप्रोग्रामिंग होती है. बिकॉज दैट मीन्स ऑलवेज मोर मनी, ये वाला मैसेज जाता है मोर मनी का. मोर मनी, नाउ यू विल नॉट जस्ट गिव, यू विल स्टार्ट रिसीविंग. बिकॉज बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम हो रही है तो वो उसका एविडेंस हम बहुत जल्दी देखेंगे अपनी जिंदगी में. तो इसीलिए राउंड फिगर करके दे दो, या थोड़ा सा ज्यादा, 470 है तो 500 अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 500 दो, नहीं तो 475 तो दे ही सकते हैं ना. 5 रुपए में तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. लेकिन सबकॉन्शियस को पड़ता है, वो रिप्रोग्राम हो रहा होता है कि that this person always has more money to give, more money to give, so that more money gets absorbed and you will see that you will start receiving a lot of money. इसीलिए रोंडा बर्न ने अपने एक एग्जाम्पल में भी ये चीज बताई थी, दैट उन्होंने कहा था, जब मुझे बिल्कुल जब धमकी आ गई थी, कोर्ट की नोटिस आ गई थी कि मुझे मतलब 2 महीने के अंदर अंदर ये लोग सारा मेरा, मतलब उन्होंने सब कुछ गिरवी रखा हुआ था. एवरीथिंग वाज मॉर्टगेज्ड, हर कार एंड हाउस एंड एवरीथिंग. एंड द कोर्ट हैड सेड दैट इफ यू डू नॉट पे विद इन 2 months, then we will, whatever action they had to take, they will take. And that day she went to the market. She was not worried. She was very, very thankful for all the money that she had used. And she went to the market. उन्होंने वहां पे ATM से $100 निकाले अपने क्रेडिट कार्ड से. डेबिट कार्ड में तो उनका अकाउंट बिल्कुल खाली था. क्रेडिट कार्ड से निकाले और उन्होंने जाके रैंडम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया. और उनको कह रही थी कि मुझे इतनी खुशी मिल रही थी वो करने में, बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ उन्होंने ये पैसे दिए. एंड देन शी सेड दैट इट डिड नॉट इवन टेक 24 आवर्स कि उनके पास एकदम से कहीं से पैसे आ गए एंड एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस एंड शी कुड पे बैक हर डेट. तो ये सबको पता होता है दैट टू रिसीव यू हैव टू गिव. किसी भी चीज में
To receive, you have to give. And when you give, it will always come back to you multiplied. It always works like that. I was telling, yesterday in the house that when we went to Goa, so हमने बहुत ज़्यादा ultra luxurious trip करी है, मतलब luxuries beyond the ceiling. Those places where, of course, like that people could even just dream of. We went to those places. By Indian standards, everywhere there was a fat bill. But I have come back with much more money in my account than I had gone to Goa with. So this is called the energy, because it was a high vibration energy field. So trying to maintain that all the time is an effort sometimes, but yes, we need to do that, because iska evidence यही होता है. तो मैं यही थैंक यू ही बोल रही थी कि जितना पैसा हम लेके गए उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई होके have come back in spite of that, whatever we paid so much of it there. So paisa loves coming into our accounts, into our bank, credit card, debit card, whatever it is, that we all have. These are the sources. So wealth is something that actually is created. Wealth does not come. कभी भी आप देखोगे किसी के लॉटरी के पैसे अगर आते हैं तो वो टिकते नहीं है उसके पास, क्योंकि पता नहीं होता है ना, एनर्जी अलग होती है. अपनी एनर्जी अप करो तब वो पैसे टिकेंगे. सो पैसे टिका के रखना भी एक 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 वर्क होता है. दैट मीन इनर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है उसके लिए. दैट पैसे टिका के रखना मीन्स सर्कुलेट हो रहा है बट आपका बैलेंस कम नहीं हो रहा है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. सो इसको बोलते हैं कि टिका के रखना. दैट मीन्स आप हमेशा हाई एनर्जी में हो तो आपके पास आता रहेगा, जाता रहेगा, आता. ये नहीं होगा कि चला जाएगा ना. मैंने कभी वहां पे ये सोचा कि अच्छा इतना 8,000 का बिल आ गया सिर्फ खाने का, सिर्फ पिज्जा ही तो खाया है, like those kind of things, comparing the money to how you have spent and what you could buy with it. That's absolutely ridiculous. ओके जगह के भी पैसे होते हैं, कहाँ पे आप बैठ के कर रहे हो. अगर आपको 5 रुपए की चाय भी मिल सकती है दिल्ली में, और 900 रुपए की चाय भी मिलती है इसी सिटी में, हो सकता है उस 5 रुपए का स्वाद ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू द 900 रुपीज टी. Okay, but the ambience and everything, where you sitting, the place, that also matters, no? So never compare that इस चीज के इतने पैसे, अरे ये तो सब वेस्ट है. ऐसा नहीं होता है. Sitting there in luxury where you have someone standing by you as an escort and you're having your tea, और उसके साथ में उसकी presentation, सब कुछ, the vibe, everything matters. Okay, so don't speak derogatory way about money is very, very important. इसमें शुरू में ये लिखा हुआ है ना, having worried and envious thoughts and this and fear about money, this will pull the money down. So आज वाला जो हमारा असाइनमेंट है, क्योंकि अभी हम चैप्टर नंबर 12 तक अपने पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में कर रहे हैं, सब कुछ पास्ट एंड प्रेजेंट जो चीजें हमने यूज की है, तो आज वाला असाइनमेंट भी हमें बचपन, डाउन द मेमोरी लेन जाना होगा, और वहां से हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ किन किन चीजों पे हमारे ऊपर पैसा खर्चा हुआ है, और उसको बैठना. सो ये 2 phases में आज वाला चैप्टर है. इसमें लिखा हुआ है ना, द टुडेज चैप्टर इज इन 2 phases. टुडेज practices are in 2 phases. First is to be done in the mind and second is to be done manually. सो माइंड वाली जो प्रैक्टिस है उसमें हमको बचपन में जाना है, एंड वी हैव टू पिक अप दोज थ्रेड्स जहाँ जहाँ पे हमारे लिए पैसा खर्च हुआ है, हमारे एजुकेशन में, हमारे कपड़ों में, हमारा सेरेलैक खरीदने में, हमारा बिस्किट खरीदने में, हमारे लिए दूध खरीदने में. जब हम छोटे थे, दूध की फीडिंग बॉटल अगर हमने बॉटल से पिया है उसके लिए, फिर उसके बाद कपड़े बड़े हमको चाहिए थे, वो सारा पैसा. उसके बाद कॉन्स्टेंटली स्कूल की एजुकेशन, स्कूल में हम बर्थडे गिफ्ट्स देते थे, फिर हमारे पास साइकिल होगी स्कूल में जब हम चलाते थे, साइकिल हमने वो वॉकर और ट्राइसिकल भी चलाई होगी बिफोर कमिंग टू द बाइसिकल. सो इस तरह से बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टीवी देखते थे हम लोग, गीजर यूज करते थे, तब भी गर्म पानी के लिए हो सकता है इमर्जन रॉड यूज की हुई हो. पहले गीजर नहीं होते थे, बहुत पहले इमर्जन रॉड होती थी एक, उसको डिप करके पानी में रखना पड़ता था, फिर पानी गर्म होता था. फिर हमने वो डिश एंटीना नहीं, वो वैसे रॉड वाले एंटीना होते थे, उसके लिए दैट वी ऑलवेज हैड एंटीनाज, जिससे टीवी में वो आता था, ट्रांसमिशन आता था, आता सिर्फ दूरदर्शन था, लेकिन वो एंटीना बहुत इंपॉर्टेंट होता था.
फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हम यूज करते गए, फेस क्रीम, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, वेकेशन पे गए हूँ बचपन में, फिर यूनिवर्सिटी में इतना जो हमारी एजुकेशन पे पैसा खर्च हुआ, शादी हुई, क्या क्या लिया, फिर शादी के बाद भी पहला त्योहार, दूसरे त्योहार, एंड देन there was constantly things coming into our life. So that is what we need to kind of really think कि बचपन से लेके अभी तक हमारा कितना पैसा हम पे खर्च हुआ है, वो एक्चुअली करोड़ों में गया होगा। तो उन सब के लिए हमको थैंक यू आज बोलना है, हमको सोचना है और एक एक को उठा के उसके लिए थैंक यू बोलना है, वो सारा जो पैसा था। सो दैट हम अपना पास्ट क्लीन स्लेट कर लें पहले। अभी हम क्लीन स्लेट करेंगे, क्योंकि हमने जिंदगी में, हमें पता नहीं कि हमने कब वरीड थॉट्स पैसे के लिए लिया हो, कब पैसे के बारे में आर्ग्यूमेंट्स किए हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स घर में की होंगी पैसे को लेके, है ना, पैसे के बारे में बुरा बोला होगा, हम जेलस हुए होंगे लोगों से जिनके पास बहुत पैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इट रियली डजेंट मैटर पास्ट में क्या था। व्हाट सो इम्पोर्टेंट इज दिस मोमेंट एंड द फ्यूचर। ठीक है, जो पास्ट में हुआ है अच्छा बुरा, उसको आप भूल जाओ, उसको हमको उसकी एनर्जी चेंज करनी है। तो उस एनर्जी को चेंज करने के लिए आज वाला प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो ये मन में करने वाली प्रैक्टिस है, क्योंकि देर आर 2 पार्ट्स टू दिस प्रैक्टिस टुडे, राइट। सो ये मन वाला ये हो गया। फिर सेकेंड प्रैक्टिस में हमको एक नोट लेना है, कोई भी 10, 20, 50, 100 रुपीज, 200 रुपीज, कितने का भी आप नोट ले सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन विच कंट्री डू यू लिव इन, यू हैव टू टेक योर कंट्री करेंसी। So people who are in South Africa will use their currency. People who are in Hong Kong will use their currency. People who are in Indonesia will use their currency. People in Singapore will use Singapore dollars. People who are in India will use rupee. And rupee note, paper currency. We have to use the paper currency, not the cents, not the coins. ओके, पेपर करेंसी कोई सी भी आप लोग, कितना अमाउंट पे आप पेस कर रहे हो, इट रियली डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट पे चिपकाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस प्रैक्टिस का। बेनिफिट आपको ग्रैटिट्यूड के अमाउंट से मिलता है, मनी के अमाउंट से नहीं मिलता है। ठीक है, हो सकता है आप किसी को 500 ही दे रहे हो, बट उसमें इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप भर के दे रहे हो दैट वो 500 रुपीज का 5 लाख बनेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज एनर्जी इतनी ज्यादा है। सो इसी तरीके से अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड मैटर्स, अमाउंट ऑफ मनी करेंसी डज नॉट मैटर। जस्ट रिपीटिंग दैट फॉर यू पीपल हु थिंक कि नहीं मैं तो 500 रुपए पे लगा दूंगी वो, या लगा दूंगा ताकि मुझे ज्यादा बेनिफिट मिले, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं, ग्रैटिट्यूड ज्यादा देना है उस पे। ठीक है, सो जितना बड़ा पेपर करेंसी है, द सेम साइज वाइट पेपर ऑल्सो वी नीड टू कट एंड पेस्ट देम टुगेदर on the currency, on the front side of it. So in India, we'll paste it at the place where we have Mahatma Gandhi's photo, है ना, गांधी जी की जहाँ पे फोटो सामने की तरफ बनी होती है ना, एक पीछे का साइड होता है, एक सामने का साइड होता है करेंसी में। सामने की साइड पे हमको व्हाइट कलर का पेपर पेस्ट करना है, और बहुत हल्का सा पेस्ट करना है, क्योंकि अगले महीने उसको निकाल देना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रैक्टिस फ्रेश करनी पड़ती है। तो वो पेपर निकाल के हम वो किसी को दे सकते हैं। और सेकेंड, आप न्यू नोट बनाना होगा हमको। आज जो लोग हम पिछला कर चुके हैं, आज हमको न्यू नोट बनाना होगा। तो पिछला वाला आप किसी को दे दो, उसमें वैसे ही बहुत ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। तो उस पर्सन के जिसके भी पॉकेट में वो जाएगा, मे बी सिक्योरिटी गार्ड है कोई, आपको उनको देना था या जिनको भी देना था, तो वो आप दे दो। और खूब सारा ग्रैटिट्यूड, ऑलरेडी उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है, और बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ देना। तो जिस एनर्जी के साथ आप दोगे वो मल्टीप्लाई होके इट इज गोइंग टू कम बैक टू योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज वेल्थ। ओके, दैट गोज विदाउट सेइंग। सो वी हैव टू डू दैट, एंड उस पेपर के ऊपर लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मतलब सारी हिंदी में क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा, दैट मैं शुक्रिया करती हूँ उन सारे पैसे के लिए जो मैंने जिंदगी भर यूज किए हैं। हिंदी इंग्लिश में लिख लो, टेक्निकल चीजों में ज्यादा दिमाग डालने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे किया, ये मैंने वैसे किया, मेरा ये सेंटेंस सही है क्या, ये सेंटेंस को मैं कैसे रिफ्रेम करूं, इन सब चीजों के बारे में मत सोचा करो। इट इज द हार्ट दैट इज इम्पोर्टेंट, द इंटेंट दैट यू हैव पुट इन दैट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो जस्ट थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, एंड उसको उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है और वो नोट से चिपका हुआ है। एंड देन वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग यू हैव टू पिक दैट अप, होल्ड इट विद बोथ योर फिंगर, दोनों हाथों के उंगलियों से यू हैव टू होल्ड इट एंड रीड इट स्लोली, एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी जो बचपन से टिल डेट दैट यू हैव यूज्ड, एंड यू हैड सो मच ऑफ फन विद इट, so many travels with it, etc., you know, the clothes you've worn, the education that you have got, everything about it.
So this is the practice that we need to do today. Okay, so और फिर ये वाला note up सामने ही रखना. So when I say that I do so many practices every day, because this by default is there on my vision board. So वहाँ पे मैं लगा देती हूँ, तो वहाँ पे रोज दिखता ही है मुझे, तो I slowly read it, and not just 1 or 2 times. It is multiple times. If I'm home, then throughout the day I can see my vision board. It is right in my bedroom in front of my eyes all the time. नहीं तो फिर नहीं होती हूँ, तो शाम को तो घर आ ही जाती हूँ वापस. तो देख के आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल. एनी हाउ आई एम ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड फॉर मनी. मेरे अंदर तो वो आती ही नहीं है फीलिंग्स कोई भी कैसे भी. और किसी को भी देखती हूँ, चाहे वो कितना भी नास्टी बिहेव कर रहा हो या पैसे को ज्यादा वो कर रहा हो, आई ऑलवेज ब्लेस देम विथ मोर मनी एंड मोर विजडम. है ना. अगर कोई बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है पैसे के रुआब में आके, कहीं होता है ना, ओ मैं तो तुम्हारी कंपनी खरीद सकता हूँ जिसमें तुम काम करती हो. सो ऐसे भी बोलते हैं लोग. ऐसा किसी ने बोला था, अच्छा यू वर्क फॉर VLCC, आई कैन बाय दैट, आई कैन बाय द कंपनी वेर यू वर्क, समथिंग लाइक दैट. सो I really blessed that person with a lot of abundance and with a lot of wisdom also. I did that with a lot of wisdom, because अभी वो wisdom नहीं होती है किसी को कि क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, है ना. और ये बोल के उन्होंने अपना माइनस में अकाउंट कर लिया था मुझे ऐसे बोल के. तो मैंने उस पर्सन को बहुत ब्लेस किया दैट दिस पर्सन इज ओनली ग्रोइंग मॉनिटरली इन दिस लाइफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट ग्रोथ दिस पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग, एंड दैट इज वेरी सिंपल. सो इसलिए this is how we need to have, like attitude towards money has to be only love and gratitude. Money is equal to love and gratitude. That is all. No conjuicy, no discussing money, no this thing. And even if you enter a mall somewhere, you see something that you really love. Suppose you go to a store and you find a beautiful shoe, a pair of shoes, and you are not able to afford it, but you really love it. So give love to that shoe and for the money and say, thank you. This is a beautiful shoe, and keep it in your mind. Don't give it negative energy that 11,000 रुपए का है and I could not afford it or something like that. मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, इतना सुंदर शू मैं नहीं खरीद पाई just because वो 11,000 का है. सो ऐसे मत, मतलब पैसे से उसको लिंक मत करो. आप उस शू को बहुत सारा प्यार दो. ये मैंने अब्राहम हिक्स से सीखा है उनकी किताबों में, that when you give love, that love stays with that thing and that thing will be yours very soon. अब कहाँ से कैसे होती है ये तो आप पूछो मत, बट हो जाएगी. So that is how our attitude has to be towards money. तो ये 2 phases में practice है ना. एक बार बैठ के हमको बचपन से अभी तक we have to kind of really revisit down the memory lane and think about all the things we've used that have come with money. Even if it was a rented accommodation where you had lived with your parents, or the own accommodation, or the mortgaged accommodation, or whatever it was. All the food that we have eaten बचपन से लेके अभी तक, that has come with the money. So जितना ज्यादा आप सोचोगे और thank you feel करोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा. तो that's phase 1 of the practice, and phase 2 is हमको ये जो note चिपकाना है करेंसी के ऊपर of the country. Thank you for all the money I have been given throughout my life. बहुत प्यार से लिखो, बहुत प्यार से उसको उठाओ, and really feel very grateful in your heart for all the money that has been spent on you. बहुत बचपन से अभी तक हमने ऐश करी है, मजे किए हैं, मौजे किए हैं, घूमे फिरे हैं, चीजें इस्तेमाल की है, समोसे खाएं, कचौरी खाएं, छोले भटूरे खाएं, अच्छी अच्छी जगह जाके डोसा खाया है, गुड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स. We've had a lot of, say, tandoori chicken, dal makhni, everything all our life. So today think back of all the places and all the areas where the money was spent on us. So that's phase 1 of the practice. And phase 2 I've already told you. सुबह और शाम हमको वाला चिपका हुआ जो नोट उठाना है और उसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोलना है सारे पैसे के लिए. ये है बस हमारी आज की प्रैक्टिस, एंड दैट्स अबाउट इट. Okay, और सुबह count my blessings. Try and write different blessings, because there are so many blessings that we have. Even if it is a seat in your car where you sit and travel, you have to thank you for that. The seat of your car, the steering, all those of you who are drivers, who drivers, I don't mean that you're a driver professionally. So all those of you who drive, so say thank you for the steering wheel. Say thank you for the beautiful lovely AC in your car, जो गर्मी में ठंडा करता है और ठंड में गर्म करता है.
है ना, हीटर भी होता है वो, उसी का टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देते हैं तो, सो दैट एंड एवरीथिंग, द ब्यूटीफुल रोड, द सिटी दैट यू आर लिविंग इन, टू द पार्क दैट यू गो टू, बहुत सारी चीजें, द एयर दैट यू ब्रीथ, द बॉडी पार्ट्स दैट which are working so well, the food that you have, the house that you have, the windows and doors that you have, the carpet that you have in your house that keeps you warm in the winters. So इन सब चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे मैंने बताया, नीडल बटन, जब सोचेंगे ये वाली प्रैक्टिस ना, जब दिमाग यूज करेंगे हम ग्रेटिट्यूड फाइंड करने के लिए, तो उसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग बहुत फास्ट स्पीड पे होती है. सो डू दैट वाइल बाकी की सारी प्रैक्टिसेस चल रही है हमारी. मैजिक डस्ट एवरीवन, द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, है ना, मैग्निफिसेंट आउटकम, जो हम रोज कुछ भी करने के पहले, कोई ईमेल लिखने के पहले भी करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द ईमेल रिप्लाई दैट आई जस्ट सेंट, इस तरह करके. और हैव अ मैजिकल डे, सुबह सुबह अपना डे डिजाइन कर लो. वाइल बेड में जो रिचुअल्स हमको करने हैं वो हमने ऑलरेडी आपको वो इंस्टा पोस्ट के थ्रू भी समझाए हुए हैं, सो दैट इट स्टेज फॉर एवर. So all that we have to continue doing. Only then our life becomes so transformational. And while at the same time, we are also doing our thoughtlessness 2 to 3 times in a day whenever we can. Just sit straight, shoulders roll back, chin up, and don't think anything. Just breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. That is all we need to do. And this will start yielding magical results. इससे inner engineering बहुत fast होती है. और रात को सोने के पहले magic rock. Never sleep with thoughts like, oh God, I have to do this. Oh, I have to do this. अच्छा ये भी है, वो भी है. No, just think of what went by today. आज कैसा रहा, सुबह क्या किया, कितना अच्छा था, वेदर इतना अच्छा था, फ्लाइट इतनी अच्छी थी, लैंड करके नींद अच्छी आई, ऑफिस कितना इजी था, ऑफिस वाज सो क्लोज बाय, बहुत अच्छा, मजा आया, ये सारे काम किए, इतने आराम से सब कुछ हो गया, थैंक यू यूनिवर्स सो मच, वो प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी बनी है, ये ऐसा हुआ. पूरे दिन भर में सुबह से लेके शाम तक आपका जैसा दिन रहा, एक एक चीज को उठा उठा के थैंक यू बोलो, और फिर कोई अच्छा सा थॉट डाल दो और उसको उसको दिमाग में पेनिट्रेट करके सो जाओ. दैट इज व्हाट आवर प्रैक्टिसेस आर, है ना. और आज की वाली प्रैक्टिस तो है ही हमारी द मैजिक मनी. और जितना ज्यादा मैजिक मनी करेंगे उतनी ज्यादा जिंदगी में बदलाव आएगा, पैसा आएगा बहुत आराम से, स्ट्रगल नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना. लाइफ इज ब्यूटिफुल इजी एंड एफर्टलेस, लाइफ इज ब्यूटिफुल इजी एंड एफर्टलेस, मनी कम्स ब्यूटिफुली इजीली एफर्टलेसली, दैट वे. तो अब हम करते हैं दूसरी बुक, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. और हम अल्कोहलिज्म का चैप्टर कर रहे हैं अभी, दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ एनीथिंग विच इज बिकम अ नेगेटिव हैबिट. नेगेटिव हैबिट, बेसिकली अल्कोहलिज्म इज अ नेगेटिव हैबिट, बिकॉज वो इंसान को कभी ग्रो नहीं होने देता है किसी भी मायने में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, and it's a big block in every area of your life. Money will not come, health will not come easily, relationships will not come easily, and it's a weak, makes us weak mentality person. So but then उस पे effort करके नहीं करना पड़ता है, मैं आज से I will stop having alcohol, it doesn't work, you will go back to alcohol. तो वही हम अभी तक पढ़ रहे हैं. So we'll continue reading. Yes, Mohit ji, good morning to you. Of course, as you know, people will give you all manner of excuses or alibis as to why they drink. They may blame their drinking or some tragedy in the home, some crisis in their life, lack of money, or education. The real reason is negative thinking, which has brought about an emotional maladjustment. As a man thinketh, is it in his heart, so is he. The word heart is an ancient word meaning the subconscious mind. In simple language, it is saying, as you think and feel, so are you in all departments of your life. Emerson said, a man is what he thinks all day long. This is the answer and the whole story. The cause is in yourself, in your habitual thinking, your mental attitude, and reaction to life. The alcoholic addict is really seeking to escape some sense of bondage or some subconscious restriction. In other words, the alcoholic lacks confidence and poise. I told a woman one time not to give any more money to her son as he spent it all on drink. I said, you are only contributing to his daily
delinquency. Oh, she said. He kneels down, kisses the Bible, and swears he will never touch another drop. I believe him, then I give him the money. He seems so penitent, remorseful, and so full of condemnation of himself for the way he acted, and that I think he means it. I explained to her that these were idle statements on the part of her son and really meant nothing. Under no circumstances should she give him any more money. I spent some time with her explaining that the boy had no free will but was just boasting about his willpower to give up drinking. His statements and oaths that he would never touch it anywhere were meaningless, as he had no power to back them up. In other words, he did not know where the power was, nor how to locate it. She brought him to see me. He came rather reluctantly, making the statement that he was not an alcoholic. I told him to stop this nonsense, admit it openly, and not dodge it. That is the first step in healing. Many remain alcoholics because they refuse to admit they are. This boy was condemning himself, saying, I suppose I am no good. Alcohol took him into a world of temporary illusion, where in this morbid imagination he was king for a day. This gave him a false sense of confidence and a temporary sense of self sufficiency. He admitted that if he took one drink, he lost all control and drank until he fell unconscious. The reason for this is obvious. His mental control was rendered null and void due to a subconscious pattern engraved on his mind over a long period of time. It is like a track on which the train moves. He had established a mental track in his mind on which ran images of drinking bouts, of glasses filled, images associated with feeling of enjoyment and success. The minute this confirmed drunkard took a drink, that was suggestion for another and another until he fell unconscious. He had subjectified a belief in the necessity of alcohol, the law of the subconscious being that of compulsion. The moment he took one, he was compelled to take another. This young man said, what all alcoholics say, if I don't take the first drink, I am all right, but the minute I take the first, I lose control. The reason is that the one drink brings an outcropping of the subconscious mind, which in the case of the alcoholic, due to long habit and conditioning, says to him, have another, have another. His subconscious belief and fear is his governor and controls his conduct and actions. Man is bound by his beliefs, opinions, training, and environmental influences. He is conditioned to react the way he does. Life is forever seeking to express itself through man. The desire for true place, peace of mind, abundance, and security are cosmic urges within all men. There is a law of mind which, when understood, enables him to realize his cherished desires. The cause of all confusion, strife, and problems in the world is man's failure to realize his heart's desires. Show man the power of his own subconscious mind. Tell him that if he will imagine the end, feel it subjectively, and remain faithful to his ideal, the subconscious will bring it to pass. People who try and stifle desire have really an unconscious impulse towards self-destruction or self-oblivion. When man begins to believe in a power greater than himself, lodged in his own unconscious depths, he is on the way to health, happiness, and peace of mind. There is nothing new about the following technique. It is as old as man. The most ancient wisdom available said, as a man imagines and feels, so is he. The first step, get still, quiet the wheels of the mind, enter into a sleepy, drowsy state. In this relaxed, peaceful, receptive state,
You are preparing for the second step. The second step. Take a brief phrase which can readily be graven on the memory and repeat it over and over again as a lullaby. Nancy's school technique: use the phrase sobriety and peace of mind are mine now, and I give thanks. To prevent the mind from wandering, repeat it aloud or sketch its pronunciation with lips and tongue as you say it mentally. This helps its entry into the subconscious mind. Do this for 5 minutes or more. You will find a deep emotional response from the subconscious. It is wonderful. The third step. Just before going to sleep, practice what Goethe used to do. Imagine a friend, a loved one in front of you. Your eyes are closed, you are relaxed and at peace. The loved one is subjectively present and is saying to you, congratulations. You see the smile, you hear the voice, you touch the hand and the face. It's all so real and vivid. The word congratulations implies complete freedom. Hear it over and over again, and you get the reaction which satisfies. I think we'll read only so much. Thank you, Mohit ji, for reading. Thank Such you. important content it was. Thank you for reading so beautifully. So here we see where Dr. Joseph Murphy's explained that अगर किसी को कोई भी negative चीज अगर हटानी है तो उसका उन्होंने तरीका पहले उन्होंने बताया that alcoholic will always look for a reason, उसको validation अपने आप को देना पड़ता है because there's so much of guilt and shame inside. It is a practice of guilt and shame. There's a lot of guilt and shame inside. They are not able to look into the mirror in their eyes and say I love you. It's very very difficult because they are ashamed of themselves. उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होता. सो हियर डॉक्टर जोसेफ मर्फी सेइंग दैट दे विल लुक फॉर रीजंस कि ओ उसने मुझे ऐसे कह दिया, पैसे की प्रॉब्लम है इसलिए पीना है, ये रीजन है इसलिए पीना है. ऑलवेज गिविंग देमसेल्फ सम गुड रीजन दैट जस्ट टू वैलिडेट दैट लुक दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई आई एम ड्रिंकिंग. So, but then he says that this is just a case of like mentally being very, very weak. But then उन्होंने बाद में बहुत अच्छे से समझाया है that अगर जैसे वो वुमेन के बारे में बताया था कि उसका बेटा बहुत ड्रिंक करता था, तो that woman would give her money and he would always say that you give me money, I will not drink. और वो बाइबल के ऊपर हाथ रख के he would actually swear that no, I'm not even going to touch a drop of this and you just give me money. She kept giving him and then she told Dr. Joseph Murphy that every time when I give him money, he always touches the Bible and holds it and he swears that he will never touch a drop. लेकिन वो दोबारा से पी लेता है. तो इस तरह से तो बट देन शी सेज लेते कि नहीं नहीं वो बाइबल पे हाथ रखता है. आई थिंक आई हैव टू बिलीव हिम, मुझे सपोर्ट करना चाहिए. आई हैव टू बिलीव हिम. एंड उसके बाद देन लाइक जब ये अपने बेटे को लेके गई डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास, that woman took the son and went to Dr. Joseph Murphy. वहां पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो तुम कि तुम छोड़ दोगे और तुम्हारा मन नहीं करता. फिर उसने शेयर करना शुरू किया बिकॉज ऑब्वियसली एक फसाड होती है ना दैट नो आई विल नॉट टच अल्कोहल एट ऑल नाउ, एवरी टाइम जस्ट प्रॉमिसिंग दैट अननेसेसरली. So then Dr. Joseph Murphy ने कहा that it is okay, it is not easy for you to leave. फिर उन्होंने उसको subconscious mind के बारे में बताया and then there were 3 steps that he gave. So ये 3 step के बारे में उन्होंने वो बताया है. So we'll just revisit those 3 steps. Anyone और वो किसी भी addiction के लिए हो सकता है. It is not just. So first step we all know that mind को शांत करना होता है. Get into the alpha state of mind. The alpha state of mind is when we are absolutely, our brain waves have slowed down because कोई thought नहीं है दिमाग में, है ना. आंख बंद वैसे ही करते हैं. डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हमको ये समझाया था that जैसे ही आपकी आईज बंद होती है 80% आपका माइंड वैसे ही स्टिल हो जाता है. Because eyes are catching 80% of our perception. I didn't know that. I came to know only when we read Dr. Joe Dispenza. So 80% माइंड शट हो गया, आईज जब बंद हो जाती हैं, और उसके बाद बाकी की चीजें आपको थॉट्स में यू विल हैव टू कंट्रोल इट. लाइक डोंट लेट एनी, इवन इफ द थॉट कंट्रोल, एक्नॉलेज एंड लेट इट बी. लाइक डोंट कोर्स, डोंट मेंटली ऐसे नहीं मुझे थॉट रोकना है रोकना है रोकना है. दैट विल नेवर लेट यू बी काम. So just focus on your inhalation and exhalation. That is what is the first. That means अब आपका mind receptive हो गया है, subconscious mind absorb कर लेगा जो भी अब आप बोलोगे. Second step में
में अब आप वो फ्रेज यूज करो, लाइक हमने अभी इसी चैप्टर में अबाउट 3-4 days ago वी हैड लर्न दैट फ्रेज, सोब्राइटी मतलब सोबर होना, सोबर रहना. सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड आर माइन नाउ एंड आई गिव थैंक्स. सो दिस ललेबाय की तरह, लोरी जैसे बच्चे को सुनाते हैं, वैसे अपने आप को रिपीट करते रहो. सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड आर माइन नाउ. और स्लोली स्लोली बोलना है, क्योंकि माइंड का स्लो ब्रेन वेव्स है, तो अगर बहुत फास्ट बोलेंगे तो वो एक्चुअली बीटा में जाने लग जाती है. तो धीरे धीरे बोलना है. सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड आर माइन नाउ. एंड इट इज, उन्होंने स्पेशली ये बोला है दैट यूज योर लिप्स एंड टंग टू स्पीक इट, क्योंकि उसकी वजह से इम्प्रिंट बहुत सॉलिड होगा. तो ये आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, ये जो 3 step प्रोसेस है ना. इवन इफ इट इज टू डू विथ मनी, इवन इफ इट इज दैट माइंड कम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट. So this also you can say, you can also say that my health is getting better and better by the day, and I give thanks for it. That thank you that I'm enjoying the best of health. Thank you so much that I'm enjoying the best of health. So you can just keep repeating this sentence or whatever it is that your challenge is. Okay, तो उसको आप लगातार रिपीट करते रहो फॉर अबाउट 5 minutes और मोर, 5 or 10 minutes, and then you will feel a little bit sense of peace and calm in your subconscious mind. ठीक है. फिर थर्ड स्टेप ये है दैट आप किसी क्लोज वन को, जिनके साथ आप जनरली शेयर करते हो चीजें, उस पर्सन को इमेजिन करो, जो गेथे का मेथड है ना. इमेजिन करो कि वो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं उसी चीज के बारे में, जो भी चीज है. सपोज आपका ये था दैट यू वांटेड मोर वेल्थ और यू वांटेड टू बाय अ हाउस, आपने सपोज उसका किया था. नाउ यू सी दैट समबडी जिसको आप बता सकते हो दैट आई हैव फाइनली बॉट अ हाउस इन दिस सिटी, और वो पर्सन आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है किसी और को, और उसकी आवाज आप जानते हो, उसकी टोनालिटी आप जानते हो, किस टोन में वो आपसे बात करती है, करता है, जो भी है. And then you have to, that is the third step. Imagine, so eyes are still closed. Okay, but you're imagining the person who's close to you, जिसके साथ आप शेयर करते हो सारी बातें, वो आपको congratulations बोल रहा है अपनी आवाज में. तो इस तरह से you will see that like slowly, but ये repeat करना पड़ेगा, because repetition बहुत mandatory aspect होता है reprogramming का. So mind में अगर कोई भी subconscious mind में कुछ भी reprogram करना है, तो आपको वो लगातार करना पड़ेगा. मतलब ये सुबह और रात को तो करना ही पड़ेगा. इन्होंने बोला है रात को सोने के पहले फिर से करो आप, मतलब रात को सोने के पहले ये वाला करो, ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली जो प्रैक्टिस होती है. लेकिन आप हर बार भी कर सकते हो, जितनी बार करोगे उतनी बार ये धीरे धीरे करके बिलीवेबल होता जाएगा. एंड वी विल सी 21 days ऑनवर्ड्स ये इम्प्रिंट हो गया है. बट वो 21 दिन की जो जर्नी होती है ना, सबसे ज्यादा फॉल वहीं पे हो जाता है हमारा. बीच में हम लुढ़क जाते हैं, कहीं पे 2 दिन भूल जाते हैं, 1 दिन नहीं करते, इस तरह से. तो चाहे आप दिन में 2 बार या 3 बार ना करो, दिन में 1 बार तो करना मैंडेटरी होता है. So now the subconscious mind has got reprogrammed that sobriety and peace of mind are mine now, and I give thanks. So you will see the difference in evidence happening in your life. और ये वाली प्रैक्टिस आप किसी भी चीज के लिए, एज आई मेंशन्ड, आप यूज कर सकते हो. दैट हैविंग अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपको करना है, उसके लिए कर सकते हो. बीइंग एबल टू स्लीप ऑन टाइम, आप उसके लिए कर सकते हो. दैट जो लोग बोलते हैं आई लव स्वीट्स एंड आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ, और जिसके कारण आपको लगता है कि योर हेल्थ इज नॉट दैट ग्रेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका वेट भी बढ़ रहा है. सपोज आपको ऐसा लग रहा है दैट मिठाइयाँ मुझसे कंट्रोल नहीं होती, आप उसके लिए कर सकते हो. झूठ बोलने की आदत है, उसके लिए ये कर सकते हैं. किसी भी चीज बिंज करने के लिए, सपोज लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, तो अपने आप को लगातार बोलते रहो दैट ऑल माय वर्क गेट्स डन बिफोर टाइम एंड आई लव इट एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट. इस तरह से. सो यू विल सी दैट सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी के कारण रिप्रोग्राम होता है. अगेन द वर्ड कंसिस्टेंसी इज कमिंग हियर अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग बिना कंसिस्टेंसी के नहीं होती है. इसीलिए मैं आपको बार बार ओवर एम्फसाइज करती हूँ इस वाले वर्ड पे, दैट कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को लेके. ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप बहुत व्यस्त हो, बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपसे नहीं की जा रही है, आप बस 5 प्रैक्टिस अपनी चूज कर लो, जिसमें से सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, रात को मैजिक रॉक है, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, और जो भी दिन का असाइनमेंट है. आप ये सिर्फ 5 प्रैक्टिस करो, लेकिन ये रोज करो. ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए एक दिन भूल गए एक दिन नहीं. आप बेशक कम कर लो, लेकिन करना, कंसिस्टेंसी वर्क्स बेटर देन वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी. So do that every day, and then only you will feel the difference.
है ना। अगर कंसिस्टेंटली आप ये, अगर बहुत पैसे का दिक्कत चल रहा है तो आज जो हमने मैजिक मनी किया है इसको करूँ कम से कम 21 दिन लगातार। रोंडा बॉर्न ने भी बोला है, हर टेक्स्ट में लिखा होता है। सो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे जब कोई चेंज आता है तो उसको मिनिमम 21 दिन लगते हैं, 21 दिन लगातार करने के लिए। एक दिन भूल गए तो 21 दिन नहीं होगा। असाइनमेंट्स में भी तो यही है, रॉन्डा बर्न ने बोला है, गो बैक 3 days। अगर आपका आज छूट जाता है तो आप 3 दिन पीछे जाओ। सो इस तरह से हमको करना होता है। सो कंसिस्टेंसी जरूरी होती है ये करने में। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी सारी किताबों में बोला है दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू इट एवरी डे, अदरवाइज यू विल फॉरगेट, so hence that becomes important, because subconscious mind ki deprogramming is a technique. It is not a some spiritual practice or something. It's a technique that we have to do. Like अगर आप सब्जी बना रहे हो तो कैन यू ऐड सब्जी और फिर आप तेल डालो? ऐसा नहीं होता है ना। इन द पैन, वट एवर यू मेकिंग इट इन द स्किलेट, इन द पैन, आप पहले ऑयल डालोगे, उस ऑयल को गर्म करोगे, उसके अंदर फिर आप जो भी जीरा या राई का तड़का डालते हैं वो तब डालते हैं, है ना। उसका प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हम अपना जो भी सब्जी डालोगे, फिर उसमें नमक डालोगे, फिर बाकी का मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करके अब आप उसको ढक के रखोगे। सो ये प्रोसेस हुआ ना। सो यू कैन नॉट रिवर्स दिस, और यू कैन नॉट स्किप अ स्टेप कि ठीक है मैं तेल डालती नहीं हूँ, मैं सीधे आई विल पुट ऑल द एग प्लांट्स, बैंगन जो भी आप बना रहे हो, यू विल डायरेक्टली पुट इन द ड्राई तवा विदाउट डूइंग, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप यू पुट जीरा और राई। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज दैट्स अगेंस्ट द प्रोसेस, दैट विल नॉट गिव यू द सेम आउटपुट। ओके, सो ये टेक्निक होती है हर चीज को सही तरीके से करने की। तो सही तरीके से करने की टेक्निक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि इसको लगातार हमको रोज करना पड़ेगा, दिन में 2 बार या 3 बार, कोई बात नहीं। किसी दिन आप 2 ही दिन किए, किसी दिन आपने 3 बार किया, किसी दिन आप एक ही बार कर पाए, बट एटलीस्ट यू हैव डन इट। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। 24 घंटे में मिनिमम एक बार करना जरूरी है, अगर आप दूसरी बार नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, और रात में 1 सेकंड में मतलब you don't, if you're not giving too much time to it, suppose in the night, not 5 minutes, but you are at least bringing that thought into your mind and then going to sleep after it, so that itself also will make a lot of difference. Okay, so this is all we have for today's session. Anyone wants to share or add anything? Otherwise we'll all log out since it's a work day. And thank you so much for everything. And thank you, Soumya, for posting the videos every day, and Anu for sharing the stories with me. I'll try and be more consistent with giving you, like regular videos. I am doing it. I am consistently doing it. Ma'am, Yes, good ma'am, you morning, ma'am. are consistent. Yeah, I'm being consistent in some way or the Thank other. you. Thank You you. Thank walk the talk, ma'am, so no question about yeah. that. Sometimes it's very challenging that my eyes are Yeah. shutting and then I'm making a video. So most of the videos I have made after I've come back home and just before sleeping, and I've cleansed my face and everything. That's why you must be seeing it in the morning, क्योंकि मैं वो रात को post कर पाती हूँ. Yes, Yeah. yes, ma'am. But then Thank you so for much, all your ma'am. Thank support. you. Thank you so Ma'am, much. can I share something? Anji. Ma'am, this is Lakshmi. Can you see me? Yeah, Can- absolutely. We can see you. Yeah, ma'am. So this happened just 2 days before, ma'am. Hmm. I'm doing all the practices, 98% which was told by you and every day. The miracle happened 2 days before. I think it's on Friday. Yeah, Friday, ma'am. Friday or Saturday. In the last year in May 2023, in one online scam, I lost some big amount of money, and we have given the complaint also. So 2 days back, I've received a call from a person from a court of Miyapur, where so they told that please bring your Aadhaar card, we need to check, and your money has been recovered, and the amount has been recovered is more than half which I have lost. So this I wanted to share, and moreover, after this incident has happened last year in 2023, universe has given me multiple times of money in other sources, which I have got so many opportunities, ma'am. So this Yeah. one I want to share. This is wonderful. So just keep your Yes, money ma'am. energy very high, and you will actually see that money will come from different tributaries, because you are the sea of Yes, money. ma'am.
Okay, so Yes, you know ma'am. that there are different tributaries from different rivers coming. So one should always have multiple sources of income. So you have to work. I always keep telling, program this in the subconscious mind that I receive money from multiple sources of multiple income sources. with ease Yes, and ma'am. joy. Yeah. Yeah, So ma'am. then you're not dependent on one. One can go down and come up, but then all the other sources are intact. Yeah, ma'am. And ma'am, one more question. The other day I told that I have released my magic check for my son, which for his education fees. So that we have received in the form of lended by some of the person. So how we will consider this one as it is created or what, ma'am? I wanted No, to no. know. As long as you're receiving the money, it has come to your life. Just be Hmm. grateful for it. Okay. Yeah, you got Okay, the ma'am. money, Yeah. no? What if that person had not given Yes. you the money? Yes, ma'am. Yeah, Hmm? yeah. This I wanted to know. Yeah. And another sharing, ma'am, very few weeks before, I have listened to a sharing from the group. I don't know, I forgot the name. That once, if any client or any person who is leaving, stopping the services with us and leaving off, we have to give them. Shalini had shared, huh? Yes, Shalini. So it really touched me. I think how wow, how courtesy is that once somebody is going away from, we have to give them a nice send off. So this I did the same day. I have searched the list who all have gone from my services. So even if it is a long time, I have texted a chat and I put in the chat GPT to frame it in a nice, polite way. The chat GPT has given it a very nice way. So I have edited the names and I have put for all the people who have gone from my services. And imagine, ma'am, they are so happy. They have replied with lots of love. And imagine one person who has stopped the services and he told that they will come back again. So I want to say my gratitude to Shalini for Yeah, sharing this, and I implemented and it has really worked. yeah. So this, yeah, Awesome. ma'am. You are Thank you, ma'am. amazing. Thank you so much for sharing and bless you with a lot Yeah, of money in your life from all over, like thank you, raining ma'am. money in your life. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. And Thank you also, for sharing. yeah, I'm doing multiple practices like other than this magic book, like Ho'oponopono and the affirmations, which in the group we will receive from in the announcements group. I will take an evening walk and each affirmation 11 times, or I won't count also how much times I want to feel like chanting. I do that. Ma'am, that is really giving me a peace and it is also helping me not other thoughts come into my mind. So Hmm. this I wanted to share. Great. This is called inner engineering. That is what you're doing to Yeah. yourself. You will see Yes. the outward reality happening very. Yes, ma'am. Thank you so much for sharing. Thank you, Thank ma'am. you. Bye Thank you, bye. ma'am. Love you all. Love you all. Thank you. Ho'oponopono for money can be done. Yeah, absolutely. You can just do it 108 times for the money. Just keep money for whatever you have done. So take 100% responsibility for whatever money situation you have right now. And say, I'm sorry, please forgive me anytime when I've not treated you well or whenever I've done anything wrong. And thank you. I love you for always giving me so much of joy, blessings, and that way. And then after that, do it for 108 times. You can do that. Ma'am, yeah, these Ho'oponopono for money I'm doing, but not the intensity is not more like I will do only 21 times like that for all three Ho'oponopono. So I will Okay, count in my which is finger. okay. 21, 11, 9, you can do Yeah, any ma'am. number of time. There is no Yes, set ma'am. number. Like for But my like, own life, I do only 7. Like 7 times I speak, thank you, I'm sorry, please forgive mm, me, thank you, I love you. And then mm, 7 times I say only thank you, I love you. That is for my own life. So uh, I do it just 7 times for that. So it is not because yeah. there are multiple other practices also that Yes, all the ma'am. time. So yeah, Thank you, ma'am. everything Thank works. you. There's no less, there's no more, there's no nothing as long as we do Mm, it. So yes, yeah, ma'am. thank Thank you you, ma'am. so much for Thank sharing. Yes, Vandana ji. यस गुड मॉर्निंग मैम Morning. मैम आज मनी का चैप्टर है तो मैं मनी वाली ही एक प्रैक्टिस के लिए शेयरिंग कर रही हूँ कि इस दीपावली को ना मतलब ये मैं कहूँगी मेरे लिए बेस्ट दीपावली रही। मैंने इस दीपावली में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जो मेरे लाइफ के लोग हैं जिन्होंने मुझे सर्विस दिया है तो मैंने सोचा था इस दिवाली में उनके साथ शेयर करूं। तो जैसे कॉबलर्स होते हैं, पास में एक आइसक्रीम वेंडर वाला है तो वो है। तो मैंने सभी को ना मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करी
और सभी को 100 रुपीज बहुत ब्लेस करके उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। जो घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर भी जो वेजिटेबल वेंडर वाला बैठता है, फ्रूट्स वेंडर वाला बैठता है, तो मैंने ऐसे सभी को दिया और बहुत दिल से और बहुत खुशी से दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस मतलब उस समय देते हुए मेरे मन में कुछ नहीं था, लेकिन छोटी दीपावली वाले दिन मुझे मैम 1 लाख रुपीज एज दिवाली गिफ्ट मिला है। और जो एक एक बहुत बड़ा करिश्मा सा, मतलब मैजिक सा हुआ है मेरे लिए कि मैंने बहुत दिल से सबको दिया था। और जितने, जैसे अपने गार्ड्स को तो देते ही हैं, लेकिन जो ऑफिस के भी गार्ड्स हैं उनको भी दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में हम यदि दिल से हम करते हैं और किसी को देते हैं, तो भगवान अपने आप ही कहीं ना कहीं से Yeah, हमें मैजिक बना के देते हैं। तो yeah. ये चीज, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने अपनी सोसाइटी से बाहर लोगों के लिए सोचा कि Hmm. मैं उनके लिए भी करूं, क्योंकि जैसे आप सेशंस में करती हैं, बताती हैं, तो ये चीजें बड़ी इंस्पायर करती हैं कि हमें सबके साथ शेयरिंग करनी चाहिए। और मतलब ये 1 लाख रुपीज का गिफ्ट तो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे मुझे दिवाली गिफ्ट मिला है। तो रियली बहुत अमेजिंग, मुझे हाँ, बहुत डिफरेंट यूनिवर्स का लगा। गिफ्ट है। शुरू हो गए बस हाँ, सिलसिला। अब होता रहेगा। लेकिन थैंक आप यू भी सो एक्ट मच। करते रहो। हाँ, ये हम्म, मुझे करके ही बहुत, उनके चेहरे पे जो खुशी देखने को मिली ना, वो बहुत अमेजिंग थी। हम्म। बट मतलब जैसे कॉबलर को दिया, तो ऐसे जैसे मतलब उनकी आंखें, उनकी खुशी देखने लायक थी। तो हमारी बड़ा, डाइनिंग टेबल पे मिठाइयाँ पड़ी होती हैं, खत्म ही नहीं होने को तैयार होती हैं, बिकॉज नो वन ईट्स स्वीट्स, बट देन फॉर देम इवन इफ यू गिविंग लाइक अ एक पाव का डब्बा, फॉर देम इट इज लाइक उनकी तो दिवाली बन गई है। उनकी दिवाली बन गई हाँ, सच में हाँ, मैम। वो खुशी देखने लायक थी। या, ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये चीज करनी चाहिए जिसमें अपने आप को सच में जो दिल को खुशी मिलती है ना, वो इन हाँ, चीजों से मिलती है। हाँ, लवली, शेयरिंग में। ग्रेट शेयरिंग, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मोर मच एंड मोर मैम, वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत वंडरफुल सेशन। आप बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो बहुत कमिटेड है आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पूरी टीम है ऐसी की ऐसी। मेरे हाँ जैसी। हाँ, आपकी तो सारी टीम ही ऐसी है मैम। मैं लाइव नहीं सुन पाती हूँ, मैं यूट्यूब से सुनती हूँ आजकल। हाँ, 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 तो कोई मतलब लाइव नहीं आ नहीं। पाती एज हूँ लॉन्ग एज मॉर्निंग टाइम में। कंसिस्टेंसी है, रोज सुन रहे हो ना यूट्यूब से, तो बस हाँ, ठीक मैं है। यूट्यूब से कोई सुनती हूँ। बात नहीं। थैंक यू so much. God bless you. थैंक यू Nidhi सो will मच। have to take your sharing tomorrow. Got a work day and the gym, so yeah, we will need to run. Thank you so much. अच्छा, थैंक यू Thank सो you, Thank you Thank you so ma'am. so much, much. ma'am. Thank Thank you. you. Bye bye. Thank you so I'm much. sorry. Thank you. Thank Bye. you, Thank you, ma'am. Thank you ma'am. so